वेट करना सभी लोग, हम जरा स्टैंड लगा रहे हैं। ओवरहेड स्टैंड है, मतलब ओवर स्टैंड नहीं है, ये ट्राइपॉड स्टैंड है। इसको इसमें स्क्रू को डील कर दिए और इसको भी डायरेक्शन देंगे। वेट करना जरा सा। तो क्वेश्चन ही पूछना है। आस्क क्वेश्चन ऐसे फर्स्ट टू आंसर विल बी इन पोस्टर। तो दिखाया यस बुलेट ऑफ बुलेट हो गया। चलो भाई पेज किए और तैयार हो क्वेश्चन के लिए। दिख रहा है? मैंने कल तुम्हारे साथ खेला था व्हाट वाज योर नेम। ओके दिख रहा है, ठीक है। ये क्या लैंग्वेज है कोडिंग की? क्या पढ़े, रुको बॉक्स लाते हैं, वेट। ये इसका कोड है, हैक कर रहा है गेम को। मेरे को समझ आ गया। व्हाट्स वर्ल्ड्स बेस्ट पॉइंट ये रहा चैट। चैट कैसे देखते हैं? टॉप चैट। मैंने पहले आंसर देगा वो स्ट्रीम देख रहा है और ये नाम था तुम्हारा तो ये अच्छा याद आ गया। वो लल्लू नाम से। अरे धीरे बोलने रे, जोर से बोलेंगे। जोर से बोल रहे हैं, अपना बाथरूम तक आवाज चल जाएगा। तुमको पता है हम लल्लू बोल के पहले इनिशिएट कर रहे थे। ईयरफोन का जो हुआ ना क्लिप, उसको वहां पे लगाओ। टोपी का पास लगाओ ना क्लिप। माइक देखना ऊपर के। हाफ हाफ आवाज की इतना जोर से आवाज आ रहा है। माइक को लगाओ ना तुम क्लिक करके टोपी पे। टोपी पे क्या है? उसका माइक ऊपर के साइड होना चाहिए, बटन नहीं ऊपर तो माइक उल्टा लगा है तब जो इतना जोर का आवाज आ रहा है। हाँ माइक यहीं पे लगाओ यहाँ पे रखे इतना जोर से आवाज आ रहा है। लगाओ ना उसको। क्या वैसे कुछ नहीं, अब धीरे बोलो। सॉरी कौन दिया आंसर? मिलन मत चलो सीधे स्टार्ट। ओके तो स्केलेटन पढ़ते हैं, क्योंकि स्केलेटन हम नहीं पढ़े हैं, बाकी सब चीज पढ़ लिए। क्लासिक है। स्केलेटल सिस्टम फॉर्म्स द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। ठीक है भाई। इट इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स एंड कार्टिलेजेस। ओके, बोन्स जैसा कि जितना हमको पता है, बोन्स जो है हार्ड मटेरियल है, कार्टिलेजेस सॉफ्ट है। द बोन्स आर हार्ड एंड ब्रिटल वाइल कार्टिलेजेस आर कंपेरेबली सॉफ्ट एंड इलास्टिक। ओके, ये यहाँ पे दिया हुआ है। और क्या बोला जा रहा है? फंक्शंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। ओके, मेन फंक्शंस क्या है? सपोर्ट। स्केलेटल सिस्टम वर्क्स फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी। इतना सा बस करते हैं अंडरलाइन। Skeleton system supports the body, maintains shape. It gives proper shape to the body, protection. It surrounds and protects inner delicate organs. Like छोड़ना, बस delicate organs हो गया। वो तो हम भी बना के लिख देंगे, इतना तो पता ही है क्या क्या प्रोटेक्ट करता है। Movement of body parts. It provides attachment to the skeletal muscles and helps in movement of body parts like arms, legs, and etc. और locomotion. Skeletal system with muscles help in locomotion and handling of various objects. Okay. Formation of blood cells. RBC, WBC are produced in the bone marrow of long bones. पीठ टेढ़ा हो जाएगा, तुम बैठ के गेम खेलेगा। ताकि याद अब तक तुम रख रहा है 90 डिग्री के एंगल में बैठो। 90 डिग्री, एक लकड़ी घुसा लेते हैं पीठ पे। 90 डिग्री रखो, यहाँ सटाओ पूरा पीछे। तकिया क्या डाल रहा है? पोस्चर ठीक है, 60 डिग्री में रहेगा, रहने दो। पीठ देखो तेरा पीछे जा रहा है, मुंडी आगे आ जाएगा। क्या? The bone marrow of long bone has hematopoietic tissue which forms blood cells. अच्छा, ठीक है, समझ गया। Where bones store minerals such as calcium and phosphorus, which are essential for the body. Calcium और phosphorus essential है। अच्छा, breathing, ribcage helps in breathing. ओके, अरे जगह बनाता है ribcage। Types of bones. The skeletal
is formed of three types of bones, namely long bones, short bones, flat bones. Okay, long bones. These bones are found in limbs. Limbs क्या होता है? That is arms and legs. Okay. Each such bone has long cylindrical shaft with thick and bordered ends. Ribs are long bones and serves as livers. अच्छा liver है. Short bones. These bones are found in wrist and ankles. ये वाला wrist ना और पैर का ankles. The short bones of vertical columns are ring shaped. Okay. हम वेट कर रहे थे कि कोई वेट करेगा जब कोई बाहर निकलेगा वहां अंदर कौन Flat bones. These bones form skull, ribs, shoulder, and hips. A flat bone has two hard and bony plates with a softer material, bone marrow, between them. Flat bones protect vital organs of the body. ठीक है, ये रहा स्कल. ओके, जॉ बोन, कॉलर बोन, स्टर्नम, ह्यूमरस. ह्यूमरस ये होता है. ओके, रिब्स ये. ठीक है, बैकबोन. ओके, हिप गर्डल. अच्छा, रेडियस ये है. रेडियस ये है तो अच्छा दो हड्डी है यहाँ पे. ये पहले वाला रेडियस है, दूसरा अल्ना. ओके, हैंड बोन्स. ओके, फेमर, फिंगर बोन्स, नी कैप. ये नी कैप है. ओके, टिबिया पैर का नीचे वाला, फिबुला उसका दूसरा पतला वाला फिबुला, और फुट बोन्स. ओके, हो गया. अब ये पढ़ लेते हैं. ह्यूमन स्कल सिस्टम. द ह्यूमन स्कल सिस्टम फॉर्म 206 बोन्स इन इन्फेंट बर्थ. छोटा बच्चा का 300 बोन्स होता है. सम ऑफ देम आर देम फ्यूज एज द बेबी ग्रोस. जैसे बड़ा होता है बच्चा, एडल्ट में ट्रांसफॉर्म करता है तो उसका बस 206 बोन्स बचता है. ओके, क्या हम एडल्ट है? एडल्ट में 18+ ना. अच्छा, तो अभी तो 206 नहीं हुआ होगा. द मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन आर एक्सियल स्केलेटन, एपेंडिकुलर स्केलेटन. एक्सियल स्केलेटन. Axial skeleton consists of skull, vertebral column, and thorax. Skull. Skull is the skeleton of head and is formed of 28 skull bones and only hyoid bone. It is separated into following regions: cranium and or brain box, sans capsules, facial regions, hyoid. Cranium or brain box. It encloses and protects the brain. It is formed of 8 bones, permanently fixed together by zipper-like structures. Zipper, अच्छा वो पीछे में था एक. The cranial bones are flat and formed by a wall of cranial cavity. It opens on lower side by foramen through its spinal cord. After emerging from brain, continues to cavity of vertebral column. ओके, यहाँ से वर्टिब्रल कॉलम पे चले जाता है. इसका ये फ्रंटल पार्ट, ये जो जिप दिख रहा है ना, जिप लाइक स्ट्रक्चर यही है. तो ये इसका फ्रंटल आगेगा, ये पेरिटियल, ये स्क्वैश मसल और सर्चर. ये सर्चर है. ऑप्टिकल. ऑप्टिकल है. थैलेपेनिकुला. ओ, जाइगोमेटिक आर्क. ये लोअर जॉ और मैंडिबल. ओके, ये लोअर जॉ है. इधर क्या है? फ्रंटल, आगे का पार्ट. फ्रंट भी, हाँ फ्रंट. ए अलग रहा तो ये फ्रंट हो गया, तो सीधा पता लगेगा फ्रंट का पार्ट. लैक्रिमाइल. आई का जो जगह होता है. नासल. नासल तो वैसे ही पता है, नोज का. जुगल. जुगल है या जो भी हो. अपर जॉ, ये वाला दांत के ऊपर देखो कैसा लग रहा है. प्रेमैक्सिला. लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज थिक. ये देखो. अरे किताब सब गिर जाएगा, टेबल पे जगह नहीं है. वेट करो सब. ओके, ये रहा नॉलेज डेस्क. लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज थिक बोन, i.e. फेमर. फेमर क्या है? ये है फेमर. ये वाला लॉन्गेस्ट बोन है. लॉन्गेस्ट बोन. The smallest bone in our body are three tiny bones in the ear, which are joined to inner side of the eardrum in the form of a chain. The nails and the teeth too hard are not bones. Facial region.
Facial क्लासिक है, region. इसमें The तो बहुत facial सस्ता region ही है। is formed of 14 bones. 15 मिनट हो It गया, includes क्लासिक खेले bones थे। of upper jaw and lower jaw, and bones that form palate. आइसस स्टार Upper jaw is firmly attached to cranium, while lower jaw is movable. ये रहा वाटर ब्लू कौन सा hyoid इसको? bone of man. Sense capsules. These are formed of two sets of six bones that surrounds आइसस ब्लू। sense organs: eyes, nose, ear, eyes, and nose. वाटर ब्लू तो मेरे कहने पे Hyoid दे or दिया अगर नहीं हुआ ना, visceral मेरा बैंड skeleton. बच जाएगा। अगर मैं फिर भी Horseshoe-shaped नहीं bone करोगे तो मैं lies at the सब्सक्राइब कर base दूंगा। अरे of हो tongue जाएगा। just above the larynx, अरे ये तो नहीं था यार। also called tongue bone. Functions of सूरज skull. वो क्या बोलते हैं, मैं टेल हो जाएगा। Cranium protects the brain and sense capsules protect eyes, ears, and कोई nose. टास्क नहीं कर रहा The हूँ, movements बात of करो यार। lower jaw enables us to drink, eat, talk, and sing. ये कैसी Hyoid बंकी bone है? support tongue. अरे उसका Vertebral देखते हैं। column or backbone. The backbone extends from the base of the skull to the hips. It is हैं? called spine. To provide flexibility to the लो back, भाई हो गया the backbone तुम्हारा। is formed of 33 small तुम्हारा ring-like इच्छा bone पूरा pieces हो गया, called vertebrae. कोई है Okay. नहीं, मार डाला मेरे को। Cartilaginous discs or pads are present between the centers of तो adjacent एक्सपीरियंस vertebrae. क्या है? These are वो called सैबोटेज कैसे मारा intervertebral गया? discs. They act हाँ as shock कौन सा absorber का है? and वो allow तो मारा limited कौन, मैं तो movement. भूल क्या जाऊंगा। cartilaginous disc ये क्या होता है? Or pads are present between the centers of adjacent vertebrae. These are called intervertebral ये discs. क्यूट है बहुत। They act as shock इसी के साथ absorber. रहो। हम लोग कौन ये नहीं देखते हैं मारेगा, जरा ये डायग्राम। मारेगा। ये सर्विकल वर्टिब्रे नेक रीजन का, ये चेस्ट रीजन का, तो इसको थोराइक कैसे पता वर्टिब्रे, है? ये बेली रीजन का लंबर वर्टिब्रे, हिप रीजन का जिसके पास जाएंगे वो स्क्रैल वो वर्टिब्रे, प्रोटेक्ट होगा। टेल रीजन का अब आते हैं। कॉर्डल वर्टिब्रे. The ये क्या vertebrae होता are है? bound ससन ओरल bound together by tough tissue ओरल called ligament, which avoid उसका है क्या? dissolution. The vertebrae column consists 32 vertebrae, but only 26 vertebrae can be counted because of their fusion in sacral and caudal region. और कितना टास्क है यार, बहुत Structure सा of a टास्क है typical उसमें। vertebrae. The basic plan of all mammalians vertebrae is the same. Each vertebrae has the following parts: centrum, करो cylindrical भाई, ठीक body, करो। the centrum, a bony neutral ये arc इतना which टास्क encloses the आओ। neural canal, a median spinous process from which neural arc the neural spine, ये भी a सुन लो pair यार। of process from side to side of दो दो बॉडी एक साथ। centrum, the transverse process. The neural arc and ये neural spine क्यूट है, provide क्यूट है, attachment to the इसीलिए muscles. Different regions of मुझे तो vertebral पता चला। column. The vertebral column is differentiated into following regions. Cervical region चलो or गेम neck एक region होगा, has 7 cervical vertebrae. तुम Thoracic सिक्योरिटी। region and chest region is formed of 12 thoracic vertebrae. Along with sternum and ribs, these bones form thoracic basket and rib cage. Thoracic region provides articulation to pectoral girdle. Lumbar region मैं or सौ belly एमएस region पे has 5 lumbar लेकिन vertebrae. They provide Carney articulation might to be self pelvic report. girdle. No, it's Okay. not self report. It's cute only. You saw you with Chima. Sacral region. भाई चीमा का कैसे प्रोनाउंसिएट करें? चीमा या चीमा? ये एक ही बोल रहा है। Sacral region or hip region is formed of 5 sacral vertebrae. In adults, they are fused to form single one called sacrum. देखना है मेरे को। Caudal regions or tail region, formed by fusion of 4 caudal vertebrae and 2 small bony pieces. Neck region, 7 vertebrae. Chest region, 12 vertebrae. Belly region, 5 vertebrae. Hip region, 5 vertebrae. Tail region, 4 vertebrae. चलो भाई जीत गए। Functions. Vertebral column forms curved axis of the body and maintains the body in एक erect क्लासिक और position like खेलेंगे, a उसके बाद हाइड एंड cantilever सीक, bridge. क्या बोलते हो? Supports body like a एक beam. क्लासिक खेले या हाइड एंड सीक खेले? It protects the viscera, internal क्या बोलती organs. पब्लिक? It houses and protects the spinal cord. It provides leverage and support हाइड एंड to सीक girdles and assist in जितना locomotion. मेजोरिटी बोलेगा वही होगा। Thorax, ribs. Ribs are curved bone which articulate with thoracic vertebrae at the back and unite with sternum in the front. There are 12 pairs. Ribs with thoracic vertebrae and sternum form thoracic basket or rib cage. Each rib is a flat, long, curved, saber-shaped bone. Its head is produced into two processes. One of the two processes articulates with the centrum and the other one with the transverse process of thoracic vertebrae.
Ribs are of I have three to go. types. Okay. The first 7 pair of ribs are attached to the मैंने directly कि इसको sternum. क्या करना है, इसको कोई बोलते हैं बोल ट्रू बोल रिब्स यार। क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच्ड होता है। ये देखो, बगल में चला ये कैसे हम लोग। डायरेक्टली मतलब अटैच है इससे। ये देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये भी डायरेक्टली है। ओके, और कितना 7 है ना। ओके, द नेक्स्ट 3 पेयर्स ऑफ रिब्स आर अटैच्ड टू द 7th पेयर ऑफ रिब्स। लास्ट पेयर ऑफ 2 रिब्स रिजर्व फॉल्स रिब्स। तो इस ये जो इसके बाद जो है ना, सातवां के बाद कुछ भी रिब्स, ये 7 है। इसके बाद कुछ रिब्स है जो कि सातवां वाला से कनेक्टेड है, इसको फॉल्स रिब कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, ये इसमें कनेक्टेड है और ये जाके उसमें कनेक्ट हुआ है, तो इसको फॉल्स रिब्स कहेंगे। और फ्लोटिंग रिब्स किसको कहेंगे, जो कि हवा में उड़ता है, जैसे ये हो गया फ्लोटिंग रिब्स, जैसे ये हो गया। दीज आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, वो कनेक्ट नहीं होता है जाके इससे। फंक्शंस ऑफ रिब्स। रिब्स फ्रॉम form rib cage which protects lungs, heart and large blood vessels. Ribs helps in breathing. The floating ribs protects the kidneys. अच्छा, काम भी होता है फ्लोटिंग रिब्स का। स्टर्नम ब्रेस्ट बोन, ओह मतलब ये वाला ना। ओके, इट इज़ अ लॉन्ग नैरो। अच्छा, ये इतना इसको बोला जा रहा है, ये लॉन्ग है नैरो and dagger shaped of flat bone. Okay, it lies in the middle part of the thorax, chest middle part. Yes, it consists of an upper expanded bony part, a narrow middle portion and a cartilaginous lower part. ठीक है। Functions of sternum. Sternum take part in the formation of rib cage. It helps in breathing. It has red bone marrow which forms blood cells. Okay. अभी तो बहुत पढ़ना है। Appendicular skeleton. It includes girdle and limb bones. This can be separated into 2 categories: bones of upper extremities, bones of lower extremities. Upper extremities. It is form pectoral, shoulder girdle, and forelimbs. Pectoral or shoulder girdle. Pectoral girdle is formed of two distinct halves. Each half is formed of a shoulder blade. Shoulder blade क्या है? ये है. At the back of a collarbone in front. Each shoulder's blade is formed of single triangular bone, a scapula. ये वाला. It has socket or depression called glenoid cavity. The head of the upper arm bone humerus fits into the glenoid cavity. Okay. कोई स्ट्रीम देख रहा है क्या? चैट करके बताओ जरा। द कॉलर बोन कॉल्ड कैविलस। अच्छा, ये वाला। हाँ हाँ हाँ, यही कॉलर बोन है। is placed between neck and shoulder. Okay. Forelimbs. Forelimbs. Human beings have two forelimbs. Two forelimbs. Forelimbs है क्या? चाहिए, हाँ, दो दो गो है, हाथ तो दो गो है हम लोग। और arms consisting of 60 bones. Oh, 60 bones. Each forelimb consists of the following bones. The upper arm has one long bone humerus attached to the shoulder blade. The forearm has two long bones, radius and ulna. The wrist is formed of 8 small pieces of bones called carpals. The palm is made up of 5 bones called the metacarpals. Forearm क्या होता है? पूरा बोलते हैं क्या? ह्यूमरस है ये, ठीक है। बहुत गलत चीज है तब ये तो। Attached to the shoulder blade. The forearm has two long bones, radius and ulna. Radius and ulna. The wrist is formed of 8 small pieces of bones called carpals. The palm is made up of 5 bones called metacarpals. Each hand has 4 fingers. Four and each finger consists of 3 small bones called the phalanges. But the thumb has only 2 bones. ये वाला, यस, 2 बोन्स है। थंब का तो 2 बोन्स ही है, बाकी सब फिंगर का 3-3 बोन है। ओके। फेलेंगर्स ऑफ फिंगर्स, फेलेंजेस ऑफ टोस, मेटाटार्सल्स, सोल बोन, मेटाकार्पल्स, पाम बोन्स, कार्पल्स, रिस्ट बोन्स, टार्सल्स, एंकल बोन्स, फिबुला, रेडियस, टिबिया, अल्ना, femur, humerus, for left forelimbs, palm upwards, right hand limb. Function of pectoral girdle. Each hand has 4 fingers, ठीक है, consist of 3 small bones called the phalanges, but the thumb is only 2 bones. Okay. Function of pectoral girdle of forelimbs.
Head of the नहीं bone of पूरा each पैक upper देखना है। arm, ये humerus देखो rotates in the cavity, gallbladder cavity of the same कौन सा plate, पैक चाहिए? scapula. Because of this articulation, we are able to rotate our arm in a circular motion movement. मतलब movement. अलग Hands are देखो modified for grasping objects. Humerus, radius, ulna, ये बोल क्या रहा है मेरे ये को समझ वाला में नहीं आ रहा। palm bones, wrist bones. अच्छा पांच palm bones ये है, wrist bones ये वाला है, finger bones ये. Bones of lower extremities, क्या pelvic, आप अपने hip पैर girdle, hand limbs. पेट कर सकते हो? हैं? क्या कर सकते हो? Pelvic or hip girdle. Pelvic girdle is चेंज a कर large देंगे, देखो रोज हो trough गया। shaped part सी formed दिस of two halves. आई आल्सो हैव रोज Each half, called hip bone, is formed by the fusion of three एंड bones: मेनी ilium, फैट्स। ischium, and pubis. Ilium बहुत bears सारा a फैट हो गया मेरे पास। deep depression. अरे कौन कौन स्ट्रीम दे रहा है जरा बताओ ना, चैट में सेंसर बताओ ना. चैट डिसेबल करो। The व्हाट्सएप सेंसर चैट acetabulum on ऐसा the कर सकते outer हैं। side of articulation of head, of femur bone, वो of ऑरेंज hind limb. वाला, ऑरेंज A वाला line of fusion of two halves called pubic ऑरेंज symphysis वाला is seen on the कोई ना। ventral side. Okay. The hip bones ये along with देखो sacrum. Sacrum क्या है? लाइन, ये है ये जिस तरह hip का मुंह बनाता है ना hip हाथ bone करने से अच्छा लगता है देखने along with sacrum. में। Hip ए and caudal. Caudal कहाँ? मंगे मेरे caudal को मत कहाँ छू, है? गंदा हाथ है तुम्हारा। हाथ तो नहीं आता है। गेम सेटिंग पे जाके गेम सेटिंग अच्छा पे भैया. जाके सेंसर अच्छा चैट टेल ये वाला, ऑफ। इसको बोलते ये ये सबमिट वाला कर टेल. दिए और कुछ करना है। Vertebrae फ्रेंड एंड form a लॉगिन large वाइड्स bony इसको ball ऑफ करो। called pelvis. कहाँ है ये तो ऑन भी कर pelvis? दो। कलर ब्लाइंड टेक्स्ट अच्छा ओके ओके. है। It encloses reproductive organs, large इससे क्या होता है? intestine इसको and ऑन करने rectum. से कलर ब्लाइंड Okay. टेक्स्ट। Hand limbs. वो नी Hand limbs. दिखता है, Each क्या बात hand है? limb is formed तो of मतलब the जो भी following कलर bones: ब्लाइंड है thick bones, उसके लिए femur. तो मेरे को इससे कलर Is the को भी दिख longest सकता है। चलो अच्छा and the ये भी अच्छा strongest है, bone मेरे in को the कलर का body. नाम याद नहीं The रहता। lower leg is formed of two bones, tibia and fibula. बढ़िया। Ankle consists of seven थैंक small यू bones called बोलूंगा बताने के लिए। tarsals. The sole of the foot is formed of five rod-like bones called अरे भाई आ जाओ, क्या कर metatarsals. रहे हो सब लोग? The foot has five toes and each toe has two small कल bones एग्जाम called टाइम आने से तो phalanges. पढ़ाई तो लिखा हुआ है। A plate-like cap in the frontal part of the knee is called patella. Functions of pelvic girdle and hand limbs. Pelvic girdle provides space to reproductive organs. अच्छा, large intestine and rectum. It transfers the weight of the body बड़ा to the तेज लग legs. रहा है ये। Patella protects the knee joints. Okay. यस माय टीचर से आ गया। ये कोड़ा रहा रुको, diagram. इसको बोलते हैं कोड़ा। Femur, patella, tibia, ठीक है। fibula, ankle bones. क्लासिक के नोट बना लो यार, हाइड एंड सीक में सब लोग खा रहे हैं। Skeleton forms the supportive framework of the body. Each half of the pelvic girdle is formed of ilium, ischium, क्लास कैसे pubic तो क्या bones. पता कि लोग There मार are दे। 33 vertebrae in human backbone. The forearms is supported by two long bones. A plate-like cap in the frontal part of knee is called क्या है? Patella. अच्छा. नक्का Bones लिया। of wrist are called carpals. बनाना। The bone marrow of long bones forms blood ये cells. देखो काम किया। Five rod-like metatarsals form the sole of the foot. Joints. What are joints? A point where two or more bones are joined together for movement or articulation is देखो ना called joint. बोलो। The movement of our body हाइड एंड सीक or में its डर part लगता is है possible इसलिए because कोई of नहीं joints. आता। At joints, डर bones तो are मेरे held को लगता together है by कि ये bands साउंड of देख रहे हो flexible पास connective करके tissue. रखो। These bands are टीवी called साउंड पे ligaments. जब खेलते हैं ना बहुत They दूर keep तक body आवाज in position. The तो बार muscles बार are आगे आगे से देखो। attached to the और ends of bones by नोटिफिकेशन the ये bands देखो, of through fibrous क्वेश्चन connective tissue रिमाइंडर। called tendons. और चलो अभी क्वेश्चन The पूछने end का of the टाइम bones है। are covered with soft cartilages. It acts as a cushion between the bones and prevents them from rubbing. The cartilages reduce friction between bones and absorb shocks. The cartilages pads are present between चलो the क्वेश्चन आ vertebrae गया चैट में, इसका and आंसर बता at the दो end जल्दी। of long bones. Type of joints. फोन Based on the पे degree हो of भाई, freedom of कांट यूज movement, यूट्यूब। the joints are ओ of three थोड़ा types: प्लीज। immovable or fixed गोवा joints. है। The joints found between skull bones are अबे immovable joints गोवा, or fixed गोवा joints. क्यों बोल रहा है? The bones of an क्रिटिकल immovable joint सिचुएशन together मतलब गोवा form a क्यों बोल रहा single है ये? protective covering. छुट्टी पूछो Slightly or इसके थोड़ी ना। partially movable joints. These मैं joints पिछले allow साल हुआ तो फेंका partial मुझे, बहुत movement गोवा of बोलता bones, है। as in case of सीधे vertebrae. पूछे गोवा बोलेगा। These joints between the joints between बदल नहीं करेगा सॉफ्ट। यस स्टार्ट। ribs and breastbone are also partially movable joint. Freely movable joint. These are the joints where one bone moves freely on the other.
Such joints are called such joints are called synovial joint. Shoulder joint, hip joint, knee joint, elbow joint, joint between the wrist bone and the between ankles. Are example of removal joint. Synovial joint. In synovial joint, the end of articulating bones are covered with a thin cap of hyaline articular cartilage. The entire joint is enclosed मेरे को रखना पड़ेगा क्योंकि डर भी लगना चाहिए enclosed within a tough synovial capsule. मेकअप करो सही में The बहुत wall डर of लग the रहा capsule is formed of है an नहीं outer dense fibrous layer and a सांस खत्म हो गया less denser, more cellular आ inner गया क्या 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 synovial layer. The cavity of the capsule between the articulating bones is called synovial cavity. It is filled with a sticky and lubricating fluid called synovial fluid. Synovial fluid permits considerable movements of artic- articulating bones without friction. Such joints are further reinforced by body by elastic ओ नो 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 ligaments, नीचे से आ रहा है cast भागो ऐसे ligaments outside the synovial capsule. These ligaments help in मार दिया रे protection of ऐसे मार क्या देता है है ये helps in उल्टा टोपी लगा these के इसका ligaments गोल help का in bringing the articulating bones back to their normal position after movement. This is why bones articulating by synovial joints have sufficient freedom of movement. Types of iliacal joints. This is perfect joint and imperfect joints. Okay, imperfect joint articulating bones are enclosed with ऑप्शन मिल गया synovial capsule which are सीख कर supported by पढ़ाई क्या elastic ligaments from outside. Hip joint, shoulder joint, etc. Imperfect joint ligaments and synovial capsule are absent. The cartilage tipped ends of bones artificially directly. For example, on the basis of degree of movement, freely movable joints are of लास्ट two प्लेयर types: ball and दौड़ा socket रहा है joint. बहुत और ये रहा ये मार दिया On the basis of degree of movement, मैंने ball and socket joint, बनता है ना gelding joint, पांच hinge छह लोग joint, तो saddle ऐसे joint, ही pivot joint. जीत कर देता है तुम्हें तो है ना Ball and socket joint. In a ball and socket joint, the end of one bone is rounded as a ball. It fits into a socket into another bone. Okay, other bone. The bone with ball-like head is freely movable in all directions. Examples: articulation of humerus bone in the glenoid cavity of pectoral girdle at shoulder. That of femur bone in the acetabulum of pelvic girdle is through ball and socket joint. Hinge joint. In this joint, a protuberance of a condyle at the end of one bone fits into a corresponding depression, so that the bone with condyle can be swung like a door on its hinge only in one direction and up to 180 degree. Examples: elbow joint between upper arm and forearm, and knee between thick high bone and lower leg are hinge joints. ये रहा डायग्राम. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये सॉकेट है, ये बॉल की तरह है, मेरे को भी चाहिए मेरे को और भी ये बनाना है हिंज जॉइंट इसके अंदर अटैच हो गया है. पाइवट जॉइंट, स्कल एंड बैकबोन, गिल्डिंग जॉइंट फॉर आर्म एंड रिस्ट, बैठा के रखने के लिए है कोई सैडल जॉइंट. बच्चा वगैरह कुछ देता हाँ, ये दिया नहीं pivot joint. In a pivot joint, one bone can rotate on the rounded or conical surface of the other bone in many plates, i.e. up and down and side to side. Example: the joint between skull and first vertebra of backbone, between first atlas and second axis vertebrae. Gilding joint. In gilding joint, the two bones can slide upon each other. These joints allow sideways as well as forward and backward movement. Examples: joints between wrist bone, carpals, and between the bones of ankle tarsals are gliding together. Joint. Saddle joint. It is an imperfect ball and socket joint in which one bone is movable on other fixed bone in many directions. Okay. Example: thumb joint, i.e. the joint between first metacarpal and carpal. Types of joints: immovable joints, structural. Types of joints: immovable joints, example: sutures between skull bones. Partially movable joints, joints between vertebrae, joints between ribs and breastbone, sternum. Fully movable joints, example: synovial joints. फर्स्ट का
किसका? फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स में फर्स्ट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एग्जांपल हिप शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, ये एग्जाम में पूछ सकता है ना. हिंज जॉइंट, एग्जांपल एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, पाइवट जॉइंट, जॉइंट बिटवीन स्कल एंड फर्स्ट वर्टिब्रा, joint between atlas and axis vertebrae, gliding joint, example joints between wrist bones, carpals, joints between ankle bones, tarsals, saddle joint, example thumb joint, joint between first metacarpal and carpals. चैट क्यों नहीं कर रहे तुम लोग? चैट करो, चैट में लिखो कुछ, लाइक मारो, लाइक, तुम लोग लाइक करा करो. ये करते हैं. The band of connective tissue that joins two bones is called ligaments. Muscles are attached to bones by tendons. Skull bones are joined together by movable joints. In hinge joint, only one bone moves over the other and in one direction only. Thumb joint is a kind of imperfect ball and socket joint. The cartilage present between two bones absorbs shocks and reduces friction. Okay, movement and locomotion. Velicantum movement involves displacement of body part, just as up and down movement of our arm, one forward and one our leg. These movements are possible by action of a special kind of body tissue, the muscular tissue. The cells of muscular tissue can contract and become shorter and then relax or come back to its original state. They use a large amount of energy to do this, which they get by the breakdown of glucose. Single muscle fiber cannot generate electricity for moving a body part. Therefore, muscle fibers occur in bundles. The muscle associated with the movement of bones and the locomotion are formed of striated muscle fibers. The muscle bundles are covered with contractile sheath of connective tissue. A number of muscle bundles together form a muscle. Each muscle has two ends, fixed ends or origin. It is the proximal broad end of muscle. By this end, muscle originates and is immovably attached to the immovable end of the bone. Movable end. It is the distal end of the muscle. At this end, the connective tissue set is drawn out into a tough structure, the tendon. Tendon is attached to the movable end of the bone. When stimulated by nervous stimulus, the muscle fiber contract. The muscle becomes short and pulls the bone at movable end. They are able to move arm or leg as we when we want. Muscles can only contract or relax, they cannot elongate. Okay. Functioning of muscles. When muscles contract, they become shorter and bring the structure closer to the body. When muscles relax, they return to retain. They return to original state and push the objects to its original position. For example, the up and down movements of our arm are controlled by two muscles, biceps and triceps. When you raise your arm, the biceps muscle attached to the scapula at the top of the radius at the bottom contract. They become shorter and faster, pulling the arm towards the scapula. So the arm bends. This is called flexion, and biceps muscles are called as flexor muscles. कौन कौन स्ट्रीम पे जरा बताओ चैट में और लाइक कर दो. When you lower your arm, the triceps muscle contract and the bicep muscle relax. It means triceps muscle becomes shorter and broader while biceps return to their original shape. This straightens the arm. This action is called extension and triceps muscle makes extensor molecules. Antagonistic muscles. The muscles which occur and work in pair and produce opposing movements or antagonistic actions are called antagonistic muscles. For examples, biceps muscles and flexor muscles. Flex the arm at the joint towards the body. Triceps muscles extend or straighten the arm and are extensor muscles. The two muscles of the pair work simultaneously but produce opposite action. When one muscle of the pair contracts, the other one relaxes. The bone provides leverage of rapid concentration and relaxation of muscles. It means bones and muscles work together. The bones move by actions of muscles. Locomotion. Locomotion is the displacement of whole body of an organism from one place to other. The propelling of the body forward, the retractor and extensor muscle by play a major role. The long bones of hind limbs act as lever and joints act as fulcrums of these levers. When food presses downward and backwards against the ground, it produces equal and opposite force which helps in lifting the leg by contraction of retractor muscles. हो गया, चलो बाय बाय. नींद आ रहा है हमको. वैसे पढ़ लिए बहुत, ये लास्ट चैप्टर बचा था.
ये नहीं पढ़े थे, सोचे पढ़ लेते हैं, ऐसे मन नहीं कर रहा था कि स्ट्रीम करके पढ़ते हैं, तब थोड़ा मन करेगा, लेकिन अभी नींद आने लग गया। तो बाय बाय सभी। तुम लोग का क्या है कल? बात कर सकते तुम लोग, चैट पे भी लिखो, कोई चैट में बात करता नहीं। क्या है ये ब्लैंक चैट इतना बड़ा? ये देखो तुम लोग, ये बुक पे रख के हम बनाए, मतलब स्टैंड, जो स्टैंड करते हैं अपना मोबाइल को, इसी पे देखो कितना बुक है भाई जूस का, 8 9। तो ये रहा। हेलो किड, वेलकम टू द स्ट्रीम। ओके बाय बाय। 296